अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 और जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कर ली था, 9 तक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द एडवांटेज ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग? यूजिबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी या ऑल ऑफ द गिवन। तो इसका जो है वो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन। उसके बाद है टेम्पलेट फंक्शंस यूज डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शंस। टेम्पलेट फंक्शन डैश यूज देन ऑर्डिनरी फंक्शन। ऑर्डिनरी फंक्शन को अपने टेम्पलेट फंक्शन क्या इस्तेमाल करती है? लेसन मेमोरी, डेटा मेमोरी या इक्वल मेमोरी। लेसन मेमोरी। उनके बाद question number 11. Non-template friend functions of a class are friends of dash. Non-template friend functions of a class are friends of dash instances of that class. कह रहा है कि जो नॉन टेम्पलेट फंक्शन होते हैं, नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास, यानी कि वो फ्रेंड फंक्शन तो है लेकिन नॉन टेम्पलेट है कि एक टेम्पलेट क्लास है उसकी फ्रेंड फंक्शन बनी हुई है लेकिन वो बस आधे खुद जो वो नॉन टेम्पलेट है। आर फ्रेंड्स ऑफ डैश इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास। वन स्पेसिफिक ऑल, इसका क्या होगा भी चेक कर लेते हैं इसका राइट ऑप्शन। सब लोग अपने घर से निकलते थे, मॉल में जाते थे, रिकॉर्ड स्टोर ढूंढते थे, सभी एल्बम्स को बारी-बारी चेक करते थे और फिर कैश देकर खरीदते थे। अभी तुमने जो भी बताया वो सब मजेदार है। शादी लगा नहीं है इस तरह की शादी। So, one specific all instances of one data type. Non-template functions, friend functions of a class are friends of dash instances of that class. Are the friends of dash instances of that class. All instances of one data type. यानी कि उस इसका जो होगा क्योंकि उनको फ्रेंड बनाए तो सारे के अंदर इस्तेमाल होंगे, सारों के मुराद है उनसे जितने भी ड्राइव किए जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन राइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड। कब कौन किया था कॉपी कंस्ट्रक्टर? व्हेन अ फंक्शन डू नॉट रिटर्न बाय वैल्यू और आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू, फंक्शन रिटर्न बाय रेफरेंस, आर्गुमेंट इज पास बाय रेफरेंस। तो जो कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर दो जगह पे कॉल की जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, जो नए ऑब्जेक्ट को पुराने ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवाया जाए तब कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है। या फिर एक फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास कीजिए बाय वैल्यू, जब आर्गुमेंट पास कीजिए बाय वैल्यू, व्हेन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू टू अ फंक्शन। सो इसका भी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 a pointer to a base class, pointer to a base class, a pointer to a base class can point to objects of a derived class, a pointer to a base class। एक पॉइंटर है जिसके पास बेस क्लास का एड्रेस पड़े, कैन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ derived क्लास। तो क्या उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। तो ये ट्रू। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो उसी से तो ड्राइव हुए हैं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं बस में। क्वेश्चन नंबर 14 है टेम्पलेट आर्गुमेंट इज टेम्पलेट आर्गुमेंट इज प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड क्लास, टेम्पलेट, वेक्टर क्लास, टेम्पलेट टाइप स्टार। तो इसका सही ऑप्शन है वो क्लास है। A template argument is preceded by the keyword class. Question number 15. Which one of the following term must relate to polymorphism? Polymorphism से इसमें जो term जो जुड़ी हुई है, static allocation, static typing, dynamic binding या dynamic allocation, dynamic binding polymorphism में आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी ऑफ टाइप ऑल, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीनों टाइप में हो सकती है। Assume, question number 17. Assume a class that is privately derived from class base, यानी बेस क्लास एक क्लास ड्राइव की है जिसका नाम ड्राइव क्लास रखा है जो कि प्राइवेटली इनहेरिट हुई है। An object of class drive located in main, an object of class drive located in the main function can access। अब एक ऑब्जेक्ट बने ड्राइव क्लास का हमें, तो वो क्या करेगा? पब्लिक मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास को एक्सेस कर सकेगा, प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास को प्राइवेट मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास, प्रोटेक्टेड
मेंबर पब्लिक मेंबर को कर सकेगा खाली उसी रीजन में प्राइवेटली इनहेरिट की गई है, तो उसके अंदर जो पब्लिकली मौजूद होगी उसको पीछे पड़े वो तो सारे के सारे प्राइवेट होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है पब्लिक मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट 22 सी प्लस प्लस। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है a copying instruction is involved when a link is passed by value। तो इसका ये रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 a function call is आवाज बंद करो स्क्रीन पे डाला नहीं ना। A function call is resolved। Question number 19 a function call is resolved at runtime is virtual member function, non-virtual member function, both virtual and non-virtual, none of the given। So function call is resolved at runtime। function call is resolved at runtime। in runtime के ऊपर function call कब resolve की जाती है? virtual member function के केस के अंदर। Question number 20 two important STL associative containers are dash and dash, set and map। So आगे question number 21 an abstract class is useful when we do not derive any class from it, there are multiple paths from one derived class to another, we do not want to initiate an object, we want to derefer the declaration of the class। तो abstract class is useful, इसका सी ऑप्शन मतलब when we do not want to initiate its object, जब उसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ अ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो ये सारे ये रिपीट हुए। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 23 है बाय डिफॉल्ट द वेक्टर डाटा आइटम आर इनिशियलाइज्ड टू 0। क्वेश्चन नंबर 24 सपोज यू क्रिएट एन अंडर इनिशियलाइज्ड वेक्टर एज फॉलोज वेक्टर इंट evic semicolon after adding the statement even dot push back 21 what will happen। 21 push back यानी कि उसके अंदर ऐड होगा शायद। the following statement will add an element to the end the back of evic and initialize it with the value 21। देखें push back एक फंक्शन है जिसको कॉल इवन एक ऑब्जेक्ट है evic, तो उसको हम लोगों ने उसका एक फंक्शन कॉल किया पुश बैक जैसे 21 उसको भेजिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड एन एलिमेंट टू द एंड द बैक ऑफ इनिशियलाइज इट टू विद द वैल्यू 21। एक वैल्यू 21 के अंदर ऐड होगी और ये 21 से इनिशियलाइज करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सच कंस्ट्रक्टर व्हिच either has no parameter or if it has some parameters then these have default values। C option। Question number 26 which one of the following is the best approach if it is required to have more than one function having actually same functionality and implemented on different data types templates। Right option templates। Question number 27 describe the way to declare a template class as friend of any class। So उस फंक्शन को उठा के इसको भी describe the way to declare a template class as a friend of any class। सेम जिस तरह नॉर्मल फंक्शन को हम फ्रेंड बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, लेकिन बस एक फ़र्क है जिस तरह फ्रेंड टेम्पलेट क्लास डिक्लेयर करवाते हैं उसके ऊपर लिखते हैं हम लोग टेम्पलेट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते होते हैं टाइप जो भी हम लोगों ने आगे यूज़ करनी होती है, तो वो आएगा लाजमी ऊपर उसके साथ फ्रेंड फंक्शन क्लास की डिक्लेयर करने के दौरान। आगे क्लासेस लाइक टू डायमेंशनल क्लास। क्वेश्चन नंबर 28 क्लासेस like two dimensional shape and three dimensional shape, दो classes हैं, एक का नाम two dimensional है और एक three dimensional shape, would normally be can create while classes like sphere and cube would normally be abstract। क्या ये two dimension या three dimensional जो classes हैं would not be normally मतलब ये तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन जो स्फीयर या क्यूब की क्लास वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये ट्रू है ये फॉल्स है, मेरे ख्याल से तो फॉल्स है। स्फीयर की क्लास क्यूब क्लास वुड बी एग्जिस्ट। ये देखें क्लासेस लाइक टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल would normally be concrete while classes like sphere and would be normally abstract। हालत जो स्फीयर की क्लास या क्यूब की क्लास है
वो जो है वो इम्प्लीमेंट वो कंक्रीट होती है, जबकि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लासेस जो हैं वो खुद जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। समझ आए? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो जनरल कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ व्हीकल, व्हीकल एक क्लास है। अब व्हीकल क्या होती है किसी को नहीं पता, लेकिन व्हीकल की क्लास से हम लोग एक क्लास ड्राइव होती है कार। अब कार का सबको पता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। तो ये फास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ट्रू लगी है तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, इन ऑर्डर टू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन मस्ट बी, ये कि किसी क्लास को हम लोगों ने टेम्पलेट बनाना है तो उसके अंदर जो पहली लाइन आएगी वो आएगी टेम्पलेट। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली लाइन आएगी टेम्पलेट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, फिर टाइप नेम और फिर टी। ये आप पेज नंबर 257 पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 30, इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस अ ड्राइव क्लास इनहेरिट्स। मल्टीपल इनहेरिटेंस की मामले के अंदर क्या होगा, केस के अंदर इनहेरिटेंस और ड्राइव क्लास इनहेरिट क्या इनहेरिट करती है ड्राइव क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, जो उसके ऊपर वाले के पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसके ऊपर वाले के पास जो कुछ भी वो इनहेरिट कर लेगा। बहुत पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स बेस क्लासेस, that only the public member functions of its base class। वो कह रहे कि पहले ऑप्शन के अंदर के मेंबर फंक्शन खाली करती है इनहेरिट जो पब्लिक के अंदर पड़ी हो। उसके बाद है ओनली द पब्लिक डाटा मेंबर्स और इट्स बेस क्लास, ये खाली मेंबर को नहीं दोनों को करती है, यानी डाटा मेंबर भी और मेंबर फंक्शन भी बेस क्लास की। डाटा मेंबर्स आर मेंबर फंक्शंस ऑफ एनी टू क्लास बेस क्लास, खाली बेस क्लास ऊपर वाली बेस क्लास करती है। तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, इन प्राइवेट डैश ओनली मेंबर, ये रिपीट हुआ है, इसका इनहेरिटेंस है इन प्राइवेट inheritance only member function and friend classes or friend functions of a derived class can convert the pointer of reference or derived object to that of parent class। Question number 32, which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having the actually same functionality implemented in ये भी repeat हुआ, इसका templates होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, बस तो ये थे आज के एमसी, आज के पार्ट। आई होप आपको पसंद आए। मजीद देखते हैं अगला पार्ट इसका। तो टेम्पलेट आर्गुमेंट इज प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड template argument is preceded by the keyword class। Question number 2, which of the following casts runtime binding, runtime binding कौन करता है declaring overridden method as non-virtual। उसके क्वेश्चन नंबर 3, function template can be overloaded by another function template, true। Question number 4, which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having this actually, तो इसका template बनता है identify the correct way of declaring an object of user defined template class A or char type member। identify the correct way of declaring an object of user defined template class A, एक template class जिसका नाम जो कि A है, नाम उसका क्या A, and for a character type member to identify the correct way of declaring an object of user defined class template class A for char type, मतलब कि हम लोग चार करेक्टर टाइप उसकी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। ए एंगल ब्रैकेट करेक्टर जो डाटा टाइप वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो नाम होता है ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाना चाहें इस टाइप का, इस क्लास का। ए क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी टाइप उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, ये होगी। तो इसका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, द यूजर मस्ट डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर। यूजर मस्ट डिफाइन द ऑपरेशन of the operation, the user must define the operation of the copy constructor, true। Question number 7, template functions use dash then ordinary function, template functions are dash, template functions use dash memory then the ordinary functions less memory। Question number ये repeat हुआ, the find
algorithm dash find matching sequences of element into containers. Find matching sequences of elements into containers. Find container that matches a specified container. Takes iterators as its first two argument. Takes container elements as its first two arguments. So इसका C है. Takes iterator as its first two arguments. Question number 9. A compiler performs dash type checking to diagnose type error. Dash compiler perform dash type checking compiler perform dash type checking to diagnose type error. Static compiler perform static type checking to diagnose the type error. क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग तो इसका ये भी रिपीट हुई दोबारा सारे डी ऑप्शन राइट. क्वेश्चन नंबर 11 वेक्टर contain continuous elements stored as an array. Question number 12. Suppose you create an uninitialized vector as follows. What will happen? तो इसका ये भी रिपीट हुआ डी ऑप्शन है इसका. आगे इन RDQ choose the best option. Data can be inserted or deleted at any arbitrary location, but the process is relatively slow. Question number 14. Algorithm can only be implemented using the STL containers. False. Question number 15. What is a class? Class is a description of kind of objects. And class की definition है ये भी बंदी class is a user defined data type. Question number 16. Inheritance is a way to add features to existing classes without rewriting them. यानी कि उनको दोबारा लिखने के बजाय वो बस इनहेरिट कर लेते हैं इनहेरिटेंस के जरिए और फीचर्स उसके अंदर मज़ीद ऐड कर लेते हैं जो चाहिए होती हैं और जो नहीं चाहिए उनको रिमूव भी कर सकते हैं. Question number 17. We use this pointer in the constructor in the body and even in initializing list of any class if we are careful. True. Dash prenumerate dash and dash methods may not be declared abstract. Private and static methods may not be declared abstract. Question number 19. Default constructor is such constructor which either has no parameter or if it has some parameters these have default values. Question number 20. Public methods यानी जो public specified की गई हो बेस क्लास के अंदर कैन डैश बी accessed in its ड्राइव क्लासेस डायरेक्टली उसको एक्सेस किया जा सकता है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए. Question number 21. The type is used to declare a reference or pointer. Declare a reference or pointer is called its static type. Question number 22. Dash members are somewhere between the public and the private members. They are used in inheritance protected members की definition है. Question number 23. Which of the following these are examples of error handling techniques? Abnormal termination, graceful termination, return the illegal. All of the given. Question number 24. Follow try block to catch the object thrown. Catch block throw block main block none of the given. तो catch block right option है. ये साथ साथ रेफरेंसेस भी दिए आप चेक कर लीजिएगा अगर कोई गलत हो तो वो कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा. Question number 25. Graphical representation of the classes and object is called object model if it shows class name only. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो क्लास का नाम खाली शो किया जाता है यानी क्लास नेम ओनली क्लास नेम एंड एट्रीब्यूट रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शो क्लासेस. सो इसका जो राइट ऑप्शन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लास नेम एंड एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. तो इसका हाल होगा क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ बताया जाता है. Number 46. Destructor can be overloaded. False. Destructor नहीं overloaded किया जाता. Question number 1. Which one of the following terms must related to polymorphism? Static binding. Which of the following causes runtime binding? Which of the following causes runtime binding? Declaring overridden method as non-virtual.
Question number 3. Which of the following is the best approach if it is required to have the more than one function and having the same ये repeat हुआ है. Question number 3 repeat हुआ था. Question number 4 check करते हैं. Which of the following is the best approach to implement the generic algorithm with minimum number of coding lines. Generic programming का algorithm हम implement करना है, minimum coding को use करते हुए templates इस्तेमाल करेंगे. ये भी उसकी समझ लें repeat ही है. Like template functions का class template में not handle all the data types successfully, तो ये true है. Question number 6. Class template may inherit from another class template too. Template classes में भी inheritance होती है. Assume a class drive that is privately derived from a class base. An object of class drive located in main can access both public member और public data member और public function दोनों को access कर सकते हैं. Question number 8. A copy constructor is invoked when an argument is passed by value and when object is initialized at the time of creation. No time copy constructor call होता है, ये invoke होता है. Question number 9. Each try block can have as many as necessary number of catch block. Try block के अंदर जितने चाहिए होंगे उतने ही catch block होंगे हैं try block के अंदर. Question number 10. Class doc element यानी document element, तो उसके अंदर हमने पब्लिक रीइनहेरिट किया, वर्चुअल पब्लिक रखा है, वर्चुअल एक फंक्शन रखा है वर्चुअल वॉइड प्रिंट. प्रिंट नाम का एक वर्चुअल फंक्शन है. जब ये कॉल होगा तो प्रिंट करेगा जेनेरिक एलिमेंट. उसके बाद एक इससे क्लास इनहेरिट की है हेडिंग पब्लिकली, ऊपर वाली क्लास से इनहेरिट किया जिसका नाम डॉक एलिमेंट है. उसके अंदर वॉइड प्रिंट का एक फंक्शन जो हेडिंग एलिमेंट को प्रिंट करेगा जब ये वाला क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, प्रिंट का कॉल होगा. क्लास पैराग्राफ भी उसी से इनहेरिट की बेस क्लास से जिसका नाम है डॉक एलिमेंट. इसके अंदर भी प्रिंट का फंक्शन और पैराग्राफ प्रिंट पैराग्राफ एलिमेंट दिखाएगा जब पैराग्राफ को प्रिंट करने का फंक्शन कॉल होगा. वर्ड मेन के अंदर हम लोग रखा डू एलिमेंट स्टार पी न्यू पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ की कंस्ट्रक्टर की जितनी मेमोरी है कि जितना साइज उतनी मेमोरी एलोकेट कर दो और न्यू जो पॉइंटर एड्रेस रिटर्न करेगा वो एड्रेस हम लोगों ने इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दी जिसका नाम है डॉक. इस पॉइंटर का नाम है पी पॉइंटर पी और इसकी जो डेटा टाइप है वो है डॉक एलिमेंट. अच्छा, तो पी स्टार दिस पॉइंटर इंट पी प्रिंट. अब पी क्या प्रिंट करेगा? When you run this program, it will print out a single line to console output. What will be that line? अब वो क्या है कि जब वो प्रिंट करेंगे हम लोग यानी कि तो क्या लिखाएगा मैं बताता हूँ. यानी कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा. दो पॉसिबिलिटीज हैं. पैराग्राफ, एक तो पैराग्राफ वाला लिखाएगा यानी कि एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर. यह प्रिंट होगा सबसे टॉप पे जो था जेनेरिक एलिमेंट, ये पैराग्राफ एलिमेंट है. तो क्या प्रिंट होगा? पैराग्राफ एलिमेंट प्रिंट होगा. Select one correct answer from the list. जेनेरिक एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट या पैराग्राफ एलिमेंट. तो प्रिंट होना चाहिए पैराग्राफ एलिमेंट. उसकी रीजन क्यों ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ कंस्ट्रक्टर कॉल किए, देख रहे हैं आप ये. तो ओ पी किसको प्रिंट करेगा? ये पैराग्राफ एलिमेंट प्रिंट करेगा. उसकी रीजन ये है कि पी जो है एक पॉइंटर है जिसने एड्रेस रखा हुआ अपने पास, लेकिन पी की टाइप जो डॉक एलिमेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्योंकि हम लोग ने पैराग्राफ का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था और यहाँ पे प्रिंट भी वही होगा, पैराग्राफ एलिमेंट प्रिंट होगा स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 11. सपोज वी हैव टू ड्राइव क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल क्लास. एक क्लास से दो क्लासेस ड्राइव ली हैं, एक बेस क्लास से दो ड्राइव क्लासेस बनी. कैन वी राइट अ मेथड with same name in both these drive classes? Choose the best option. क्या हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसका एक write a method with the same name both दोनों ड्राइव क्लासेस के अंदर हम एक ही नाम का फंक्शन रख सकते हैं?
only if the two classes have the same name. जी only if the main program does not declare both kinds. तो मेरे ख्याल में हम लोग रख तो सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हमें फिर जब उसको यूज़ करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा कि ये किस क्लास का फंक्शन है। इफ द टू क्लासेस हैव द सेम नेम, नहीं, ओनली द मेन प्रोग्राम डजंट डिक्लेयर बोथ काइंड्स, तो इसका यस होगा अली। क्वेश्चन नंबर 12, when a virtual function is called by referencing a specific when a virtual function is called when a virtual function is called by referencing a specific object by name and using the dot member selection operator. For example, square object dot draw. The reference is resolved at compile time. False, ये true. तो इसका false है. The function invocation is resolved at compile time. Question number 13. Considering the resolution order in which compiler search for function in a program, the first priority is given to the ordinary function. Question number 14. Vectors contain continuous elements stored as an array. ये भी repeat हुआ. Question number 15. By default, the vector data items are initialized to 0. ये भी repeat हुआ. Question number 16. One purpose of the an iterator in the STL is to correct the algorithm and contain S2. Question number 17. Algorithm can only be implemented using STL containers. False. Question number 18. In Dash, base class can be replaced. A base class can be replaced by its derived class. तो ये ट्रू है, सब टाइपिंग कहलाता है ये. Question number 19. This pointer does not point to current object of any class. False. करता. This pointer is a hidden pointer inside every class member function that points to the class object the member function is working with. Question number 20. Which of the following operator takes one or two argument f overloaded plus plus? Which operator takes one or no argument? तो ये इसका होता है प्लस प्लस. बाकी वो बाइनरी हैं दोनों, नेगेटिव और प्लस. दो प्लस जो है वो है यूनरी ऑपरेटर, एक आर्ग्यूमेंट लेता है ये. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following operators can not be overloaded? रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते बाकी सब. क्वेश्चन नंबर 22. The type that is used to declare a reference or pointer is called its static type. Question number 23. Dash member are somewhere between the public and the private, तो इसके protected है, ये भी repeat हुआ. Question number 24. Which of these are examples of error binding techniques? All. Dash is a relationship, inheritance is a relationship. Question number 26. Graphical representation for the classes and object is called object model. It shows all the given class name. Class graphical के अंदर सब कुछ आ जाता है. आगे classes like two dimensional, ये भी repeat हुआ. Virtual functions allow you to use the function call to execute member function of the object from different classes. आगे क्या है? Copy constructor is invoked when an argument is passed by value. ये भी repeat हुआ. ये भी repeat हुआ as many as well. Question number 5 repeat हुआ था. Non-terminate friend function of class are friend of the dash all instances of the class. Question number 7. Terminate function use dash terminate function less memory. ये भी repeat हुआ. Find algorithm takes iteration as its first two algorithm. Question number 9. Copy algorithm returns an iterator to the element one past the last element copied. Question number 10. If you have question number 10. If you define a vector v with the default constructor and define another vector w with one argument constructor to the size of 11 and inserted 3 elements into each of these vectors with pushback, then the size member function will return for v and dash for w, 3 for v and 11 for w. Which of 11. Question number 11. Which is not the advantages of the inheritance? Providing class growth through the natural selection.
क्वेश्चन नंबर 10, ये क्लास बनी हुई है तो इसके अंदर ये भी रिपीट हुआ है तो ये पैराग्राफ एलिमेंट प्रिंट करेगा। which type of which type of inheritance is being represented by the following statement? क्लास पब्लिक, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है कि क्लास जो इनहेरिट की जा रही है तो एक क्लास नहीं एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट की जा रही होती है एट अ टाइम, जिस तरह मरीमेट की चीज़ें बनानी पड़ रही है या एम्फीबियस व्हीकल। When we write a class template, the first line must be template class T. C option. Here T can be replaced with any type, but it's differable. Question number 14. Function template should be used where code and behavior must be identical to. Question number 16. Which of the following is not the advantage of programming? ये भी repeat हुआ। The specialization pattern T star after the name says that this specialization is to be used for every pointer type. Question number 18. A range is often supplied to an algorithm by two values at two iteration value. Question number 13. Which of the following is an integral part of the object? State, behavior, unique, identity, all. सारी गिला देते हैं। Question number 20. See the following statement. Cupboard has books. What is the relationship between the cup and board? Cupboard and books. Aggregation का relationship है। Question number 21. Which statement clearly defines an object? One instance of a class. Question number 22. Which means if A declares B as its friend, A declares B as its friend does not mean that A can access a private data of B. It only means B can access data of a friend. Function is one way only. Question number 23. The statement. Question 23. Statement object A is equal to object B will cause a compiler array with objects are of different data of different classes. हाँ ट्रू है ये कि दो ऑब्जेक्ट है ना, नहीं मिनट ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी असाइन कर रहे हैं तो ट्रू है, कंपाइलर ऐड देगा ही देगा, दोनों मुख्तलिफ हैं। ये ट्रू है उसका ऊपर वाले का। क्वेश्चन नंबर 23 का। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 आता है कंसीडर द कॉल given below of an overloaded operator plus relational number plus relational number 2 1 plus relation number 2 where relation number 1 and relation number 2 are two objects and relation of relational number class user defined class identify which of the above two objects will pass as an argument to the overloaded operator function. Any of the two objects randomly. Question number 25. If class D has been derived using the protected inheritance from class B, if B is protected base and D is derived class, then public and protected members of B dash accessed by member function and friend of class D and class derived from D can be, then the member of B can be accessed by member functions and friend of class D and classes derived from B. Question number 26. In private inheritance ये भी repeat हुआ। Question number 1 classes ये भी repeat हुआ, each ये भी repeat हुआ। Question number 3 function templates should be used where coded behavior must be repeat है। Question aggregate question number 4 भी repeat है। Question number 5 भी repeat है। Question the user must be true 6 भी repeat है। Question number 7 the default constructor is such a has is such constructor which either has no parameter or अगर parameter है तो default value के साइन ये भी repeat है। Question number 8 type used in dictionary reference of quantity is static type ये भी repeat है। Question number 9 how the information hidden within object can be accessed through interface के जरिए। इसका पहला ऑप्शन है through its interface, through both public and private member. How the information hidden within an object can be accessed, दो तरीके से, एक तो फंक्शन होता है एक, लेकिन फंक्शन को भी गोली मारो यहाँ पे होगा इंटरफेस वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10 the subject's life is not dependent on the life of master class in aggregation. Question number 11 encapsulation means data and behavior are tightly coupled within an entity. Question number 12 algorithm can only be implemented using STL containers false
Question number 13. We write a class template. The first line must be ये सी वाला. Question number ये repeat ऊपर वाला. Question number 13. Question number 14 आता है an STL container cannot be used to compile C++ programs. Question number 15 dash means if A declare B as its friend, it doesn't ये भी repeat हुआ. Which of the following may not be integrated part of the object protected in data member. Question number 17. Public methods of base class can directly be accessed in the derived classes. We will repeat over question number 18. Question number 19. The compiler generates the copy of function. What is the true about function templates? Compiler generates copy of the function respective each data type of data. 20. Which is an integral part of the object all. ये भी repeat है ऊपर 20 वाला. 21 जो है in a base class and the derived classes have the member function with the same name, you must be more specific which function you want to call using resolution operator. Update provides a convenient way to make a family of functions and classes, which is the following term must related to polymorphism dynamic binding, which is true about the function template. The formula generates copy. ये ऑप्शन सही है इसका. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is the best approach if you got to have more than one function? ये भी repeat template वाला इसका सही. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए टेम्पलेट में क्लास वेक्टर शार्ट स्टार दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन. नहीं कह सकते. 6 क्लास question 6 भी repeat है. When visual member function is defined in a base class and or written in five classes, if that function is called through a base class pointer to a derived class object, the derived class version is used. ये आपको बता कन्फर्म करेंगे बता दीजिए कमेंट के अंदर. क्वेश्चन नंबर 7 को question number 8. Using a class drive that is primarily derived from class base object of class.